गरीब गरजू मुलांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी यासाठी लाईफ स्कूल फाउंडेशन आणि लायन्स क्लबच्या विद्यमाने 200 शाळांना कॉम्प्युटर वाटप करण्यात आले. गरीब व गरजू मुलांना माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळावे तसेच आधुनिक स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉम्प्युटर वितरणाचा कार्यक्रम लाईफ स्कूल फाउंडेशन आणि लायन्स क्लब यांच्या विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचं उद्घाटन झेंझोर टेक्नॉलॉजीचे उपाध्यक्ष गणेश नटराज यांच्या हस्ते करण्यात आलं. याप्रसंगी 200 शाळांना कॉम्प्युटरचे वाटप करण्यात आले. ई लर्निंगद्वारे शाळा जोडल्या जाणार असून याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना होईल असंही यावेळी सांगण्यात आलं. कार्यक्रमाचं आयोजक राजू मुच्छाल यांनी केलं होतं. 3 शाळांना कॉम्प्युटरचे वितरण यावेळी करण्यात आलं. सुमती बालमती शिवाजीनगर, लायन्स क्लब लोणावळा आणि महात्मा फुले गर्ल्स हायस्कूल या शाळांना कॉम्प्युटर वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर पुणे शहर स्मार्ट सिटी व्हावे त्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घ्यावा असे मत नटराजन यांनी यावेळी व्यक्त केलं. The motivation to ensure that our city actually becomes a smart city of Pune and is more successful than many other cities in what we are trying to do. So that is what I want you to donate. I also want you to donate maybe 6-7 minutes of your time to listen to the agenda that we have for Pune. And Naren, of course, as he rightly said, we have been together for the last 1.5 years. And 2 years ago, we started an initiative in Pune called Social Venture Partners. The idea being, and I'm glad you mentioned the Carnegie example, there are many people in this city who are providing money, who are doing good work in various pockets of the city. And we said it's important for us to get these people together and collaboratively do work for the city. And why is collaboration important? We felt that look, if Mrs. Anu Aga or Mr. Rati Forbes or Naushad Forbes or so many other philanthropists, Mr. Rahul Bajaj, Mr. Baba Kalyani, are all giving lakhs and crores of money to the good of society, if we could get everybody together into one collective platform, we would be able to do two things. We would be very scientifically able to identify NGOs, social enterprises who are doing good work for society. Similarly, there will be 6 buses. So our basic goal is through mobile digital literacy in schools and libraries and standalone digital literacy centers, we will try and meet our objective of making this happen. We are so excited by this that in fact we have recently set up an entity called Pune City Connect, which is a Section 25 company, and we have given it 5 agendas. We have given it one agenda, which is of course Swachh Pune, that the entire waste management, public toilets for every child, especially for girl children in municipal schools. How do we make that happen? That's the obvious one. The second is the Pune 100% digitally literate mission. The third is what Mrs. Vandana Chavan has been very passionate about, to make Pune a really good tourism destination. How do we make the Shaniwar Wada monument look like the Taj Mahal rather than just being one area which is dark most of the time? And there are so many other areas in Pune which we can actually showcase. And finally, what we call the Pune Skills Mission, which Shumita and I are working on, which is to say that how does every child, I mean, very close to here, we actually started a center called Unnati, which was jointly set up by Zensar and Thermax. We set up a center 2 years back, and we said we will offer skills courses in retail, in various other areas. And इसके बच्चे अपने बच्चों, मेरे दोस्तों ने कीप मूविंग मूवमेंट का नाम का जिक्र किया. हम लोग एक बार एक स्कूल में गए और उस स्कूल में बच्चे ने, ये मेरी आंखों के सामने का एक मसला है, मेरी आंखों के सामने से एक बच्चे को अगर पूछते कि यार तुम आज स्कूल में क्या कमाल का लाए हो, हमारी इच्छा थी, उम्मीद थी कि वो बोलेगा कि हिम्मत लेके आया हूँ, पढ़ने की इच्छा लेके आया हूँ. एक बच्चा बैग खोल के एक रिवॉल्वर निकालता है और बोलता है ये लेके आया हूँ. और रिवॉल्वर देखते हैं ना तो डर लगता है कि गलती से वो घोड़ा दब गया तो कहीं तकलीफ नहीं हो जाए. तो उसको पूछा रिवॉल्वर क्यों लेके आया है? बोले भाई ने कल किसी को टपकाया है, बोला कि स्कूल लेके जा, वापस मत लेके आना, पुलिस का कभी भी रेड हो सकता है. अभी इस बच्चे का भविष्य कैसा है? एक स्कूल में जब हम लोग गए तो प्रिंसिपल थी एकदम दुबली पतली, शायद शरीर का वजन 40 किलो भी नहीं होगा, और उनके आंख में जो चश्मा था, ये अपना सोडा वाटर बॉटल रहता है ना, उसके नीचे जो रहता है कितना मोटा रहता है, उतना मोटा चश्मा था. मतलब उनके जो चेहरे थे उसमें सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी, लेकिन हिम्मत वाली बहुत. उनको पूछा कि बच्चे परेशान करते हैं क्या?
उन्होंने यहाँ एक दाग दिखाया, बोले ये 4 दिन पहले एक भाई आया था, वो गला काट रहा था। क्यों गला काट रहा था? बोले मेरे क्लास में एक बच्चा है जिसको 6% मार्क्स आए, उसको फेल कर दिया। उसका भाई आया था 4 दिन पहले कि मेरे भाई को पास कर, नहीं तो तेरे को हलाल कर देगा। और मैंने उसको कहा कि अगर हिम्मत है तो भाई को ऊपर लाके दिखा, मेरे को ऊपर भेजने में कोई हिम्मत नहीं लगेगी।